Good morning everyone. We are going to study chapter 5. In our last class we have seen that complex number can be written as z equals to a plus iota b. Okay, where a is the real part of complex number and b is the imaginary part of complex number. Okay, so we are going to study about the algebra of complex number. As you know that in algebra we are studying the addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so first start with the addition of complex number. Addition of complex number. In addition, if we have two complex number, that is z1 and z2, so the addition of these two complex number will be z equals to z1 plus z2. Okay, the addition have some properties, that is the closure law, the commutative law, the associative law, the existence of additive identities and the existence of additive inverse. So first is the closure law. Closure law means that when we add z1 to z2, that means when we add the complex numbers, two different complex number, then the result will be our complex number. ओके जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा. दिस इज द क्लोजर लॉ. सेकेंड इज द कम्यूटेटिव लॉ. In commutative law, two complex number, that is z1 and z2, if we add two complex number, that is z1 plus z2, then our result will be same as z2 plus z1. तो चाहे हम z1 plus z2 को ऐड करें या z2 plus z1 को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा. ओके, थर्ड इज द एसोसिएटिव लॉ. This law states that for any three complex number, that is z1, z2 and z3, three complex number, for we have z1 plus z2 plus z3. ओके, अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं z1 plus z2 plus z3 और हम मल्टीप्लाई करते हैं z1 plus z2 plus z3, तो our result will be same. Okay, next is the existence of additive identity. The existence of additive identity. Okay, for this, if we have a complex number such as 0 plus iota 0, okay, तो जब हमने ऐसे किसी भी complex number z which is equal to a plus iota b इसमें ऐड किया, दैट मीन्स z प्लस 0 हमने ऐड किया a प्लस आयोटा b के अंदर, देन वी विल गेट द सेम रिजल्ट एज z, दैट इज a प्लस आयोटा b. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. Additive inverse means, suppose we have z equals to a plus iota b, then inverse will be minus z, which is equal to minus a minus iota b. Okay, so when we add z plus minus z, then our result will be 0. तो जब हम इसे a plus iota b को minus a minus iota b में ऐड करेंगे, then हमारा result क्या होगा, 0. This is the additional property. Okay, addition की जो properties है वो है the closure law, the commutative law, the associative law, the existence of additive identity and the existence of additive inverse. Now we talk about the subtraction. Okay, when we talk about subtraction, so when we have first number is z1 and the second complex number is z2, then our z will be z1 minus z2. For example, we have z1 equals to 6 plus 3 iota and z2 equals to 2 minus iota. Then
कैसे सॉल्व करेंगे इसे, z1 माइनस z2 हम करेंगे 6 प्लस 3 आयोटा एंड इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे z2 को, दैट इज 2 माइनस आयोटा, देन आवर रिजल्ट विल बी 4 प्लस 4 आयोटा. Okay, next property is multiplication. In multiplication property we have z equals to z1 multiplied by z2. Same as addition property, multiplication property के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट वन इज द क्लोजर लॉ, सेकेंड इज द क्यूमुटेटिव लॉ, थर्ड इज द एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, fifth is the existence of multiplicative inverse, and the sixth one is the distributive law. So in multiplication our first property is the closure law. Okay, for this when we multiply two complex number then our result will be a complex number. Okay, this is our closure law. Okay, second is the commutative law. According to this, if we multiply z1 to z2 then our result will be same as z2 to z1. Okay, third is the associative law. According to this, if we have three complex number, that is z1, z2 and z3, so the associative law states as when we multiply z1 to z2 and then to z3, then it is equal to z1 z2 to z3. Okay, this will be our answer. That means कि ये दोनों इक्वल होंगे चाहे हम पहले z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें या हम पहले z2 को z3 से मल्टीप्लाई करें. फोर्थ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. According to this property, if we multiply z to 1 then our result will be z. That means कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हमारा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो z1 है एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है 1 प्लस आयोटा 0. दैट मीन्स कि इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, टोटल 0 है. तो हमारा z2 अगर 1 है तो जब हम z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, z ही आएगा. दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of multiplicative inverse. Okay, according to this property, for every non-zero complex number, that is if we have a plus iota b, non-zero means कि हमारा ना तो a 0 है ना ही b 0 है. So for this type of complex number we have the complex number a upon a square plus b square plus iota minus b upon a square plus b square. This is called the multiplicative inverse, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं z इनवर्स से या फिर 1 upon z से. That means कि existence of multiplicative inverse states that if we have z equals to a plus iota b, then we have the multiplicative inverse. That means कि z inverse will be a upon a square plus b square plus iota minus b upon a square plus b square. Next property is 6, the distributive law. According to this property, for any three complex number, that is z1, z2 and z3, we have z1, z2 plus z3. Okay, this is the distributive law, which is equal to z1 dot z2 plus z1 dot z3. That means कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में z2 plus z3 है और हमें उसे मल्टीप्लाई करना है z1 से, then our solution will be z1 dot z2 plus z1 dot z3. Or if we have z1 plus z2 and we have to multiply it by z3,
then our solution will be z1 z3 plus z2 z3. That's it. Okay, now we have the division. We have to perform the division also. Divisional property states that if we are going to divide the two complex number, that is z1 upon z1 to z2, then our solution z will be z1 upon z2. This is our division property. Okay, for example, if we have 6 plus 3 iota, this is our example. If we have z1 equals to 6 plus 3 iota and z2 equals to 2 minus iota. Okay, so our solution z equals to z1 upon z2 will be 6 plus 3 iota 1 upon 2 minus iota. Now we have to solve this as we know z inverse. This is z inverse. इसे हम और क्या लिख सकते हैं, z1 डॉट 1 अपॉन z2. ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं. तो ये हमारा क्या है, z इनवर्स है एक तरह से. तो इसे हम सॉल्व करेंगे एज 6 प्लस 3 आयोटा एंड 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा को लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस b upon a square minus, this is for iota, okay, minus b square. Okay, so again we are going to solve this. जब हम इसे solve करेंगे, this is 6 plus 3 iota and इसे solve करने के बाद this will become 2 plus iota upon 5. Okay, so again we can multiply this by this, that is 1 by 5, and we are going to multiply 6 plus 3 iota and 2 plus iota. Okay, इन दोनों को हमें multiply करना है. Then our solution will be 1 upon 5 12 minus 3 plus iota 6 plus 6. Okay, and the final result will be 1 upon 5 9 plus 12 iota. Okay, by this we can solve the divisional property. Okay, now we have the power of I. Next topic is power of I. Power of I means, as you know, we can write I squared to minus 1 because I is the minus 1 under root. Okay, iota equals to होता है minus 1 root and I square को we can write as minus 1. So this is the power. So if we have I cube, then we can write it as I square and I, which can be written as minus 1I and further minus iota. Okay, if we have iota 4, so we can write it as I square 2 square, which can be written as minus 1 square, which is equal to 1. So in general, for any integer k, if we have this type of integer k, we can write I4k. Okay, I4k के लिए हम लिख सकते हैं 1, I4k plus 1 के लिए हम लिख सकते हैं iota, I4k plus 2 के लिए हम लिख सकते हैं minus 1 and I4k plus 3 के लिए हम लिख सकते हैं minus 1. This is for general power of I. Now we have the square root of negative real number. Okay, square root, as you know, iota square equals to होता है minus 1. Okay, and minus iota square equals to होता है iota square, which is equal to minus 1 again. So we have the square root of a negative real number. कैसे निकालेंगे square root of negative real number? Suppose we have iota, suppose we have first number is root a and second number is b. Okay, suppose we have z equals to a plus iota b. So we have to find the square root of a negative real number. So we can find it as under root a cross under root b, and this can be written as root ab. Okay, so अगर हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा,
√1 which is equal to 1. ओके, एंड एज यू नो आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ठीक है. तो दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट फॉर्म ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. Again, I am telling you that if we have 3 iota, for example, if he have 3 iota square, √3 iota square, then we can write it as √3 square and iota square. So our solution will be √3 square is 3 and iota square equals to -1. Then our solution will become -3. This way we can form the square root of a negative real number. Okay. Now we have to solve exercise 5.1. Our first question is express each of the complex number given in the exercise 1 to 10 in the form a plus iota b. क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3 to 10 है, we have कि 1 to 10 तक के सारे क्वेश्चन नंबर को we have to express it in a complex number. a plus iota b की फॉर्म में हमें लिखना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 iota minus 3 upon 5 iota. So we have to solve it in a complex number. So our first question is 5 iota and minus 3 upon 5 iota. We can solve it as multiply by जब हम इसे multiply करेंगे then we have, जब I square से हमने multiply करा then we will get 5 into minus 3 iota square upon, this is 5 iota, right? We have 5. Okay, now we have minus 3 to minus 1. Okay, and iota square becomes -1. That's why we write here -1 and -3 हमारे पास आ गया. 5 iota से 5 iota हमने कैंसिल कर दिया, या फिर हमें इसे चेंज करना था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो हमने क्या किया, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है. ओके, देन वी हैव इक्वल्स टू 3. -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 3. Now our second question is we have to solve iota 9 plus iota 19. Okay, we can write iota 9 as iota 2 4 dot iota. This will become iota 8 dot iota, that is total iota 9 plus iota square 9 dot iota, that means this will become iota 18 dot iota 19. Okay, now we have iota square in both the cases, so this will become -1 to 4 iota plus this will also become -1 9 iota. Okay, so here we have cancel out iota and here it become -1, then it is also iota and equals to become to 0. and अगर हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो we can write it as 0 plus iota 0. okay, so further we can solve these all question. हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है इसे. अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन इज 1/5 प्लस आयोटा 2/5. ओके, -4 plus I 5/2. okay, this is our question number 6 and we want to solve it. so इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट हमें रियल नंबर को एक साइड करना है एंड इमेजनरी नंबर को अलग साइड पे करना है. सो वी कैन राइट इट एज 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 -5/2 आयोटा. इसे हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट को. देन वी कैन राइट 1/5 - 4. रियल नंबर्स अलग कर लिए एंड इमेजनरी नंबर्स हम अलग कर लेंगे. 2/5
5/2. ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके. देन दिस विल बिकम -19/5 प्लस आयोटा एंड दिस विल बिकम -21/10. सो दिस इज आवर सोल्यूशन कि a इक्वल्स टू हमारा है -19/5 एंड b इक्वल्स टू है -21/10. दिस इज आवर सोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव to find the multiplicative inverse of each of the complex number given in the exercise 11 to 13. 11 to 13 तक जितने भी क्वेश्चंस हमें गिवन है उनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं? वी हैव टू फाइंड z inverse. Okay, multiplicative inverse means z inverse we have to find. So our question number 11 is 4 minus 3 iota and this we have to solve. So let us consider 4 minus 3 iota equals to 0. इसे हमने z मान लिया है, z consider कर लिया है. Then z inverse will be z bar upon z mod square. ये हमारा टोटल सोल्यूशन होता है. z इनवर्स होता है z बार अपॉन z मोड स्क्वायर के इक्वल. सो और z मोड होगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, z मोड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट. ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें एक्चुअल में किस में चाहिए? z मोड स्क्वायर के अंदर चाहिए. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे a का वैल्यू है 4 एंड b का वैल्यू we have 3. okay, -3 we can consider square. So our z inverse square will be 16 plus 9 that is equals to 25 and z bar हमारे पास है 4. इसका जस्ट अपोजिट z अगर हमारे पास 4 plus 3 iota है तो z bar can be, this is equation number 1. okay, 4 plus 3 iota. So now we put the value of z bar and mod z square in equation number 1. Then our z inverse will be 4 plus 3 iota and 25. Okay, we can write it as 4/25 plus iota 3/25. This is our solution, that is the multiplicative inverse. 12 and 13 we can solve it as, and now we have question number 14. Express the following expression in the form of a plus iota b. हम एक्सप्रेशन गिवन है 3 plus iota root 5 and 3 minus iota root 5 and we have to solve it as root 3 plus root 2 iota minus root 3 minus iota root 2. ओके, इसे हमें सॉल्व करना है a plus iota b की फॉर्म में. सो लेट्स स्टार्ट. What we have to do, this is a plus iota b minus a minus iota b. So a plus, this is a plus b and a minus b. ओके, तो a plus b और a minus b as you know होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. राइट, तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 स्क्वायर अपॉन, इसे हम सॉल्व कर लेंगे रूट 3 ओपन कर लेंगे इसे सबसे पहले, रूट 2 iota minus root 3 plus iota root 2. okay, this will become 9 minus 5 iota square. okay, and this will become root 3 to root 3 cancel हो जाएगा and we have 2 root 2 iota. ओके, इसे हम फर्दर चेंज करेंगे बिकॉज आयोटा हमें ऊपर चाहिए नीचे नहीं चाहिए. ओके, राइट. सो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1. हियर 2 रूट 2 आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं 9 plus 5 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा. ओके, सो हियर हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, देन वी विल गेट 14 iota upon 2 root 2 iota square. Then our equation will be 14 iota upon minus 2 root 2. Okay, this is our solution. अब what we have to do, we will multiply root 2 from up and down. ऊपर नीचे हमें क्या करना है, root 2 से multiply करना है. First we cancel out this
14 to 2, that is 7 iota upon root 2. Now we multiply root 2 from numerator and denominator, then we have 7 iota root 2 upon 2. Okay, so we can write it as 7 रूट 2 आयोटा अपॉन 2. इसे हमें लिखना था a प्लस बी की फॉर्म में, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे 0 प्लस 7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा. दिस इज आवर solution of question number 14. That's it.